निशाकांत ओझा हमारे साथ हैं. निशाकांत जी, now how does somebody deal with something like this? An ordinary person does not have the resources wherewithal he can go to the cops and complain. If the cops turn around and say, "अरे ये China app है, हम कुछ नहीं कर सकते," what do? There has to be a method to crack down on these people. No, they can't have the confidence to say कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते. Yeah, Anand, that's basically the pain which we are feeling right now. As actually what the victim has told, it is oftenly happening frequently. And now what is the government, what is the agencies coming with a plea that कि इसका जो बैनर है, जो एक ये ऐप बनाया गया इसमें Chinese, so that basically doesn't mean that it is basically floated from the Chinese soil or something coming to India. Here within the Indian world, now the people have started, these hackers have started and modifying and creating a kind of a fake banners which basically represent that it's basically from the China, but it is originating from the soil of India inside. I had many at the senior officials where they say that I have got the exact location, but lekin sir evidence nahi hai. So evidence cannot be used in the court of law because there is no such laws prevailing which can make that person accountable for that particular thing. अगर मुझे इस इंडियन सॉइल पे करना है तो मैं अपना एक फेक वो बनाऊंगा, लोन ऐप बनाऊंगा, बैनर्स आई कैन पुट एनीथिंग एंड आई कैन स्टार्ट. जिस तरह से इन्होंने बताया अंकित ने, जिस तरह से इंसिडेंट हुआ इनके साथ, इट क्लियरली शोड दैट देयर इज नो मैलिफाइड इंटेंशन फ्रॉम सम आउटसाइड बाउंड्रीज, neighboring countries, enemy countries. It is basically the people who are using and creating these kind of nexus within the country soil. अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो the best way is basically to shut down the system, tools, whatever you are happening, because the time it is open, it is live and it will start fetching the things. लेकिन वो इट्स अ ह्यूमन नेचर ऑल्सो कि जब होता है तो वो आदमी स्विच ऑफ करने की जगह उसको और ही इज टू इंटरेक्ट एंड देयर बेसिकली थिंग्स मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो लॉ का सब बड़ा स्ट्रिगेंट इशू है यहाँ पर, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन नहीं है अपना कुछ भी. और दूसरी चीज सबसे बड़ी पॉइंट, निशाकांत जी, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क आशीष एंड आस्क हिम दिस क्वेश्चन. आशीष, व्हाट कैन द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज डू? दिस इज अ फाइनेंशियल क्राइम, सो व्हाट कैन द ईडी डू टू हेल्प? व्हाट कैन द कॉप्स डू टू हेल्प दिस? इफ देयर द नंबर इज एन इंडियन नंबर, अंकित इज सेइंग कि इंडियन नंबर से फोन कर रहा था, फोन करने वाले इंडियंस थे, तो आप ये नहीं कह सकते चाइनीज ऐप में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. दैट कैन नॉट बी द आंसर दैट वुड बी गिवन टू सच पीपल हु आर बीइंग हैरेस्ड. So Anand, I believe that some people are mistaken to understand that it's a Chinese app. No, it is not a Chinese app. It's basically the money that is coming from China. The fintech companies are Indian. They have been hired, they are being used as a front by these Chinese individuals from where the money is coming. So they are basically only conduit as far as giving the platform, the fintech companies. As far as recovery agents are concerned, they are also Indians. As far as getting the data, that is also, that comes to only Indian individuals. But ultimately, the target of these Chinese companies is basically to give the money at a very high interest rate, take that money away after giving the money to certain vulnerable people, and then taking that away through cryptocurrency exchanges. Now, I was speaking to one of the very senior officers of Enforcement Directorate. He told me that huge amount of money has gone through one of the cryptocurrency exchanges. All they have is a 16-digit number. Now nobody knows the money has gone to China. Who the final owner of that money is, who's the beneficiary, nobody knows. Even in fact the platform, the cryptocurrency exchange, they also do not know who the final beneficiary is, because they never keep the KYC data with them. So this is something really worrying, where the government of India is worried only about because the money is coming from China. They are using the Indian platform, the Indian fintech companies are being used, and finally the money goes out through cryptocurrency exchanges. Right. But how do we sort this out? अंकित, क्या आपने बाद में अब सरकार ने तो इसको संज्ञान में लिया है, कहा है कि ऐसे ऐप्स को अब जगह नहीं दी जाएगी, इनको काम करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या आप पुलिस के पास वापस जाएंगे? क्या आप चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो और जो जिन्होंने आपको थ्रेटन किया उनके नंबर्स ट्रेस किए जाए, उनको पकड़ा जाए? सर देखिए, मेरा मेन कंसर्न मनी का कभी नहीं था. पैसा था, ठीक है, वो चला गया, कोई बात नहीं. लेकिन मेरा कंसर्न ये था कि जिन लोगों ने मेरी सोशल लाइफ खराब करी, मुझे मेंटली हैरेस करा, बहुत दिनों तक मैं हैरेसमेंट में रहा. मेंटली मैं मतलब कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा था. मेरे दिमाग में पूरे दिन यही चलता था कि अब मेरे साथ क्या नया होगा, अब पता नहीं किसके पास, मेरे फैमिली मेंबर के पास गंदी फोटोज या गंदी कॉल्स चली जाएंगी. तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सर ये कम से कम ये लोग सामने आने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए कि ये लोग कौन है, कौन इन्हें ऑपरेट करता था.
कौन इन्हें इतनी अथॉरिटी देता है कि कॉल पे डर नहीं रहे हैं, पुलिस के नाम से नहीं डर रहे हैं? साइबर, अगर साइबर पुलिस की बात भी की जा रही है तो साइबर पुलिस वालों से ये लोग नहीं डर रहे हैं। ये खुलेआम आपको गाली दे रहे हैं फोन पे। मैं थाने के अंदर, साइबर क्राइम के थाने के अंदर मैं बैठा हुआ था और मेरे पास ये मैसेजेस, इनके कॉल आ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर देखिए, अभी भी जस्ट अभी मेरे को ये कॉल कर रहे हैं और ऐसे मैसेज भेज रहे हैं। तो उस केस में भी मतलब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हम कैसे ट्रेस करेंगे कि ये तो फेक अकाउंट है इनके साथ। ये मैंने इनको स्टेटमेंट से निकाल के, जो मेरी बैंक स्टेटमेंट थी, तो उसमें इंडियन ही, मतलब अपने आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में अकाउंट इनके खुले हुए हैं, जो इनके करंट अकाउंट खुले हुए हैं। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं तो चाहता हूँ सर कि ये ट्रैक हो, ये पकड़े जाएं, क्योंकि मैं तो जैसे तैसे सर, मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं जी। परिस्थितियां इतनी गंभीर हो जाती हैं उनके लिए। कल ये भी ऐसा ही हुआ है कि एक दंपति हैं जिन्होंने 50,000 रुपए लिया कर्जा और फिर अपनी जान ले ली. बट देयर हैज टू बी सम वे, निशाकांत जी, फाइनल कमेंट, देयर इज सम वे दैट पीपल लाइक अंकित एंड अदर्स कैन बी हेल्प्ड आउट. The cops can't turn around and say we can't do anything about it. Anand, the problem is that since the cops are not fully aware of these kind of issues which are getting changed frequently, every day कुछ ना कुछ हो रहा है, वो नए systems के साथ these kind of incidents are happening. As of now, the best thing is that the person should be careful for their own data whom they are interacting, because अगर इनको ये पता होता कि कोई चीज फ्री में तो कुछ नहीं आता है, so you should be careful when somebody is interacting with you. You should know what is bad data, what is good data, and then subsequently you should get connected with that person. Otherwise, you have to start your journey from there, because fintech, this financial fraud is happening in a very macro level, and it's something every day you are getting around 2,200, 300, 3,000 ransomware in one day. But we don't have any such kind of a mechanism where we can identify, because majority is coming from the soil. So it has to be, your awareness and alertness should be there, because no mechanism, no cyber security solutions or tools can prevent you from happening from these things. So you should know who interacting, where interacting. Absolutely, Anand, this is my submission. So you're saying caveat emptor is important. That means let the buyer or let the user beware. So you have to be aware. But people who made a mistake doesn't mean that they should be harassed like this. And okay, recovery is one aspect, that you need to pay back what you have taken. But to shame them, to try and intimidate them, use their contact list, that's all brazen invasion into privacy. And that's harassment. That is also punishable by law. So those clauses can be invoked. You can't call somebody and threaten somebody and go ahead and vilify somebody. So those clauses can apply. Wherever the fraud has taken place, this is also another illegal act. So there can be a way to look at it, even with no strict laws that define how to attack something or approach something like this.